गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं जी अभी ट्रेन स्टेशन के ऊपर। सो just gonna have to find our train. Let's see where my train is. That's called Birmingham train station. Grand Central. So look at there, it's nice. So we're going to customer services. तो जाके कस्टमर सर्विसेज के पास जाते हैं, जाके अपनी ट्रेन के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ से कम मिलेंगे। Morning guys, if you're booking a ticket with Etihad Airlines from Birmingham, obviously they'll have to give you a ticket for train. Just make sure when you get your tickets and when the check-in is allowed, when you can check in, you need to check in obviously on your plane, but then you need to go on a Avanti access rail. They will send you a ticket. So you need to get a ticket, the barcode to get on a train, and then just make sure you show that to ticket office the barcode. They will give you another ticket from London Houston to Heathrow. So that's really important. It's a little bit trickier, but very simple as well. So just need to make sure that you follow all the process. It's not really difficult, but yeah, it's gotta be done. So we are on a train station, waiting for our train to London Houston, and from London Houston we will be traveling to obviously Heathrow airline, Heathrow train airport to catch the train. The train is going, and now our train will be coming. Be prepared on the train station is pretty cold. Service 200 Euston, our first station call will be Birmingham International.
So we are up in Northern Line. When I sit down, then I'll explain you guys how does that work, because you have to catch, after Houston you have to catch a tram underground to come to Tottenham. From Tottenham you'll have to catch another one to go to Heathrow. A bit tricky but not that difficult either. So you catch Northern Line. That is good. So there's always a twist. So, so we're gonna have to catch a third train to Terminal 4 now. So we'll update you further up on it. This is an Elizabeth line service to Heathrow, Terminal 4. Yeah. The next station is Heathrow, Terminal 4. Anyway, if you know your way to get to it, Please keep luggage clear of the aisles if you do and not know your doors, way, you including will the area behind the driver's door. So we are in a Heathrow Terminal 4. As you can clearly see, we're in a Terminal 4. So, Terminal 4. It was a decent journey actually. It wasn't that long. A little tricky. As I said to you, कि आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए. Where you're going to, otherwise आप struggle करेंगे. Yeah. If you know where you're going to, then it gets easier for you. If you do not know to find the, I was lucky enough, I had to ask. तो अगर आप पूछते आएंगे तो आपका रास्ता अच्छा रहता है, इजी रहता है. तो हम पूछते आए कि हमारे पीछे टर्मिनल 4 पे उतने ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे. तो चलें अभी हम लोग लिफ्ट में घुसते हैं टर्मिनल 4 की, फिर बात करते हैं बाद में आपको. We left the lift, so we got into, this is called welcome to Terminal 4. So we up on a Terminal 4. So basically Terminal 4 जो आपको लेके आता है ना, जो कार पार्क में लेके आता है या फिर आपको इधर ही लेके आता है जी. हाँ ठीक है. If you come, it's easier. It's not that difficult. So yeah, we are around here. ट्रेन टिकट्स वाला बंदा खड़ा है इधर. मैं से चलने वाला. हाँ आप देखें, आप जहाँ भी आए हैं अब आपको यहाँ पे go, keep walking. Don't look at the people, keep walking. We're gonna go and find out what time to go check in, and we'll see how it works and where does it go. Actually, we're not in a Terminal 4 yet. That's an arrival. People are waiting for their taxis. So हम लोग तो अभी 4 में एंटर होने वाले हैं. So करेंसी चेंज वाले भी यहाँ पे हैं, ट्रैवल वाले. हमने चूँकि करेंसी चेंज करवा ली थी अपनी ऑलरेडी, तो आई थिंक वी डोंट नीड करेंसी चेंज. बस आई थिंक चेक इन तो मैंने ऑनलाइन कर लिया था पहले ही. बस हमारा क्या रहता है जी, हमारा रहता है हमने बस जो है ना, जो भी करना है सारा कुछ दे ला के सामान, फिर ऊपर जाके जो भी करना है. अभी तो फ़िलहाल वॉक इन आपको सराउंडिंग से दिखाते हैं. There's plenty of surroundings around. Let's show you the surroundings. Terminal 4. Oh my. So there's no list now. What the hell? I'm gonna go into the list. What the hell is the list? The toilets. What are my toilets? We need lifts. Where is it? The lifts, we missed the lift, so yeah, I think let's go to the lift. Good gentleman, help me out. Thank you, boss. Thanks, Walter. Otherwise, I would have been walking around up and down, you know. Terminal 2, departure, yeah? Thank you. It's going now, but you come back out. Thank you. But are you taking all this luggage? Yeah, we have to take out some misflagged. Oh, okay. Sorry. Is that Thank you. Cheers. is that the two?
Is that the two? Yeah. Is this two? I need to go. You getting the tube? I'm gonna get the departure in it. No, the departure's upstairs. Oh, okay, We're that's it. No, sorry. You're travelling, yeah? You're Yeah, flying? yeah, flying. It's upstairs. I'll show you. Thank you. Second floor. What's your name, brother? What's your name? My brother is a bit shy, but Gary helped us out a lot. We should be thankful to Gary, otherwise we would have been picking up this luggage and walking around. Thank you, Gary. This one, yeah? Yeah. I think they'll be closed, isn't it? The government started checking that. What's that this checking here? I think it's flight goes 2 o'clock. I'm coming from Birmingham. Well done, well done. Yeah, so that's why. You're not taking chances. Oh, no, never. Thanks, boss. Thank you very much. Thank you. So Itihad is not ready yet, so we'll have to wait. But Itihad business, Itihad first class, Itihad is here. So we have to wait. So let's see. I think once we clear the luggage from here and go upstairs, then we'll be fine and it's easier for us. चलें फिलहाल आपको थोड़ा सा ट्रिप दिखाया है. Everybody is doing what they're doing. और इसके बाद फिर लगेज चला जाएगा हमारा, तो फिर वो भी ईजी है. चलें वी हैव अ टाइम, तो मैं आपको बता देता हूँ. जो लोग बर्मिंघम से ट्रैवल करना चाहते हैं वाया इतिहाद, अप टू अगर आपका 2 डेज़ का स्टे है, मतलब एनीथिंग ओवर 24 आवर्स का अगर आपका स्टे है, तो इतिहाद आपको फ्री होटल देगा. 4 स्टार होटल होगा, नाइस होटल्स होते हैं. आपको 3 चॉइसेस दी जाती हैं. तो मेक श्योर आपने जो उनके वेबसाइट है नीचे, उसके नीचे वो होटल्स की सारी है, वो सारी होटल के बारे में सर्च करके थोड़ा सा फिर आप होटल पिक करें एक. फिर उसके बाद फिर उन 3 में से जो पॉसिबल होगा उसमें से आपको वो स्टे देंगे. फिर आपको बर्मिंघम से एक्चुअली यू हैव टू कैच ए ट्रेन. सो मेक श्योर जब आपके टिकट आपके पास आएगा, जब चेक इन ऑनलाइन बेसिकली आपको बताते हैं कि नाउ यू कैन चेक इन, तो आपने एसर रेल, और वो जो एक रेल है उसका कौन सा, आई थिंक एक्सेस रेल नेटवर्क, उसके ऊपर आपने जाना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर. फिर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है और वहाँ से आपको वो टिकट देंगे. आपने ये नहीं होना कि वहाँ पे जाकर चले जाएंगे अपने एयरलाइन का टिकट दिखाएं, नहीं. वो आपने एयरलाइन का भी आपने कर रहा हो दी, आपने चेक इन तो करना ही करना है, मगर ट्रेन का भी आपने करना है उनकी वेबसाइट के ऊपर. फिर वो आपको टिकट देंगे. फिर वहाँ से आपने लंदन ह्यूस्टन के लिए आना है. लंदन ह्यूस्टन से आपने उतरना है, तो फिर आपने नॉर्दर्न लाइन लेनी है. नॉर्दर्न लाइन आपने लेनी है टॉटनम के लिए. फिर टॉटनम से आपने लेनी है एलिज़ाबेथ लाइन, जो आपको हीथ्रो टर्मिनल 2 लेके आएगी. टर्मिनल 2 और टर्मिनल जो है ना 2 के ऊपर आपने उतर के, तो वहाँ से आपने टर्मिनल 4 की ट्रेन लेनी है. तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट देन गिव योरसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम. अगर वो कहें कि आपकी ट्रेन 8:20 पे, 8:25 पे सुबह के, या 10 बजे है, 9 बजे है, तो उससे जो अर्लियर ऑन आधा घंटा पहले वाली ट्रेन होती है ना, वो कैच कर सकते हैं. मेरी ट्रेन भी 8:20 की थी. और देन मुझे फ़ोन के ऊपर भी इतिहाद एयरलाइन ने कहा, मैंने 2-3 दफ़ा कॉल की, उन्होंने कहा जी आप कोई भी ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि टिकट तो वैलिड है और जहाज़ तो है नहीं कि आप कोई भी ले सकते हैं. ट्रेन तो आप कोई भी ले सकते हैं. तो मुझे फिर वो जो है ना 747 वाली ट्रेन मुझे मिली, जो मैंने ले ली. और मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ बिट अर्लियर. अभी यहाँ पे क्या टाइम हुआ है जी, आपका टाइम हो गया है, मुझे टाइम का नहीं पता, आई थिंक ये 10:22 हुए हैं. तो बेसिकली आप मुझे 11:30-12 बजे यहाँ पे पहुँचता, अगर 12:30 में यहाँ पे पहुँचता, अगर मैं 8:30 वाली ली होती मैंने, तो मगर मैंने वो ये वाली ली है. और अभी हम है सो आपको प्लेंटी ऑफ टाइम. चलें फिर मिलते हैं दोबारा, गपशप लगाते हैं. बस ज़रा ये सॉर्ट आउट कर लें सबका, ये चेक इन कर लें, ये सामान डाल दें उसके अंदर, तो फिर जो है ना फर्दर आप करेंगे. तो इतिहाद का क्रू दिखाते हैं, ये क्रू देखें उनका इतिहाद एयरलाइन का है, जुड़ा हुआ बैठ रहा है क्रू सारा भी अपनी ऑटो बेटो में लगा हुआ है. तो अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है, हम भी ये सामान दे के निकलें. The last time we came here, it was all chaos. So I remember, like chaos. So we up in a like terminal 4, it's like nobody's here. Even there's nobody there for the itihad as well. It's like, but they probably will come in 11:30. So I've got like an hour to wait here, and then suppose after that I'll see what to do. But right now, just need to have this luggage go, man. This suitcase is so messed up, man. It's like really broken, and I think I'm gonna dump this suitcase in a bin now. It's like wheels doesn't work.